Hello students, welcome to Skholar IAS, your one-stop solution to IAS preparation. This is Friday 7:30 p.m. and here I am with you with a very important topic in the domain of international relations. As you know, in different other areas also that we engage with, we always try to pick such certain issues which have been in news for quite some time, which don't occur in news only in a temporal sense, as in one day it is in news and second day it is not relevant. These kind of topics which we cover here uh, are of significance for mains examination most of all, right? As you know, in GS2, towards the end of the syllabus, you will find a topic that is India's bilateral relations or India's interest in certain topics which are taking place globally. So the topic that we are going to cover today falls in that domain of the syllabus, right? Again, students, it is not to deny that these kind of questions can have certain facts which can also make a very good prelims question. So you should be always having two kind of approaches in your mind. One is picking up specific facts through which I'll take you in this presentation. And next, you should also try to get overall sense, overall theme of the topic, right? And once you maintain a balance between the two, having good control on the facts and nitty-gritties of the topic, for instance, the name of the place, the location of that place in the global map, right? Name of certain institutions which are part, if some fact and figure is there in the news, for instance, area of the land or some name of the river, these kind of things are of very much importance for prelims. And also, if you include these things in your mains answer, they increase the authenticity and specificity of your topic, right? Whatever you are writing, that will not remain very vague and abstract. Second, you should also focus on getting the overall theme. What is the issue in the news, why it is important, how it is going to impact long-term interest, geopolitical interests of India, and how India has been responding to this. In a larger scheme of things, you have to situate that, right? So let us move ahead for today's discussion. We will come to this particular diagram just in 1 or 2 minutes. So students, we are today going to talk about the issue of Rohingyas, right? रोहिंग्यास के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि why this issue, as I told you, has been there in news for quite some time, but what brings it in news today, right? ये issue तो है ही, pertinent issue है रोहिंग्यास का, लेकिन आज ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि भाषण 4, इस नाम को देख लेंगे, प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है नेटिव लैंग्वेज में. तो ये भाषण 4 या भाषण 4 जो एक साइक्लोन प्रोन आइलैंड है बांग्लादेश का, वहां पर काफी सारे रोहिंग्यास को सेटल किया गया है रेफ्यूजी कैंप्स में, और वहां का जो लिविंग कंडीशन है बहुत पुअर है. इसी बात को लेकर के काफी सारे लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया. ठीक है, ये है बैकग्राउंड जिस वजह से ये टॉपिक फिर से न्यूज में आ रहा है, राइट? अब हम देखते हैं मैप के थ्रू कि कहां पे क्या है. अगर आप इस मैप को एनलार्ज करेंगे तो ये आपका इंडिया का टेरिटरी है, ये बीच में फ्लैंक हो रहा है बांग्लादेश, और फिर से इंडिया है. आपको पता होगा, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के बाद एक बहुत थिन एरिया है जो फिर से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो 7 सिस्टर्स है उनको कनेक्ट करता है. दैट वेरी थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड, इफ यू लुक एट द मैप, इज कॉल्ड चिकन नेक कॉरिडोर. Listen to the term carefully, chicken neck corridor. Why it is called chicken neck corridor? Because if you look at the body of a chicken also, the head and the remaining part of the body are relatively bigger in size as compared to the connecting neck. The neck of a chicken is very thin as compared to its body. So a metaphor is given. एक कंपैरिजन के लिए हम कहते हैं कि भारत का नॉर्थ ईस्ट एक बड़ा पोर्शन है, नॉर्थ, और फिर बल्क ऑफ इंडिया है, और बीच में जो कनेक्टिंग टेरिटरी है सिक्किम और बांग्लादेश के बीच से जाती हुई, वो बहुत पतला सा टेरिटरी है जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, राइट? सो इस चिकन नेक कॉरिडोर ये कहीं ऊपर में होगा और यहाँ बांग्लादेश है. बांग्लादेश के यहाँ पास में जो रेड कलर का डॉट आपको दिख रहा है, जहां मेरे माउस का कर्सर है, ये एरिया जो है यही भाषण 4 है.
ये एक आइलैंड है। बांग्लादेश का जो पूरा का पूरा टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है, उससे थोड़ा सा दूर आप देखेंगे उसका एक आइलैंड है। जैसे इंडिया के केस में लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी, या अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इसको हम इनलार्ज करके इस साइड देख रहे हैं, ये भाषण 4 है। और इसमें जो ये एरिया है स्पेसिफिकली, दिस एरिया हैज बीन इनहेबिटेड बाय दिस रोहिंग्या रिफ्यूजीज। रोहिंग्या रिफ्यूजी का केस हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैप कर समझ लेते हैं। तो ये एरिया जो है, नाउ ट्राई टू कॉन्फ्लेट दिस इशू विद अ जनरल प्रॉब्लम, दैट इज बे ऑफ बंगाल। अब आप अपने ज्योग्राफी का नॉलेज यहां पर लेके आइए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यू कैन नॉट लिमिट योरसेल्फ टू वन डिसिप्लिन। While talking about this topic, you have to bring in the fact that in the Bay of Bengal, a lot of tropical cyclones arise, right? In past week itself, we have cyclone Yas. Cyclone Yas that originated in Bay of Bengal. Don't confuse. Cyclone Taukte originated in Arabian Sea. Cyclone Yas originated in Bay of Bengal. So even if we are knowing that our states like Odisha and West Bengal are typically prone to the devastation caused by cyclones, Bangladesh is also very much affected. And not only that, you also know that climate change is taking place, right? So the overall average temperature of the globe itself, atmosphere itself, is rising. So when that temperature rises, polar ice caps melt and that water comes to the oceans. So the sea level of the ocean is also gradually rising. These are very much pertinent constraints. ऐसी बात नहीं है कि सी लेवल आज एराइज कर रहा है, ये डेकेड्स एंड डेकेड्स में हमें मार्जिनल चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन ये मार्जिनल चेंज भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक थ्रेट हो सकता है। सो बांग्लादेश, रिमेंबर स्टूडेंट्स, इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज which is going to get severely affected due to sea level rise. Sea level rise होगा तो उनके जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो समंदर के करीब हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत कम है, वो पानी के अंदर समा जाएंगे। तो जाहिर है अगर वो पानी के अंदर समाएंगे तो उस एरिया में जो बसाहट है लोगों की, जो ह्यूमन इनहैबिटेशन है, उन पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से ये भाषण 4 जो है, एक एरिया ऐसा चुना गया जहां जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, रोहिंग्याज, उनको जाहिर है कोई भी कंट्री इतनी आसानी से अपने नॉर्मल लैंड या पॉपुलेशन में मिंगल होने नहीं देगा, ड्यू टू सो मेनी रीजंस, ड्यू टू रिसोर्स कंस्ट्रेंट, ड्यू टू कल्चरल इश्यूज, ड्यू टू इश्यूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, due to demographic changes, due to employment crisis. There are so many reasons. We cannot welcome unlimited number of people from the neighboring country, right? So what Bangladesh is doing, it is accepting a certain number of Rohingyas from Myanmar who have fled Myanmar due to a lot of persecution what is taking place there due to army of Myanmar, and they have been separately located on this रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ बांग्लादेश। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों के साथ एक भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन कंसर्न नाउ? एज आई टोल्ड यू, भाषण 4 दैट इज फ्लोटिंग आइलैंड। नेटिव लैंग्वेज में इसका मतलब ये हुआ, इज ऑल्सो नोन एज चार पिया और थेंगर चार आइलैंड, इज एन आइलैंड इन हटिया बांग्लादेश। ये भी आप याद रखेंगे कहां पर है। The island was formed from a built-up of silt in the Bay of Bengal 20 years ago. अब आप थोड़ा और देखेंगे कि डेल्टाइक फॉर्मेशन जो होता है रिवर्स का, जब रिवर जाती है समंदर से मिलने, समंदर के मिलने से पहले ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया पे आप देखेंगे डेल्टा फॉर्मेशन होता है, राइट? और ये बहुत फर्टाइल लैंड होता है। तो इसी सिल्ट के आने की वजह से बे ऑफ बंगाल में दिस आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। और जाहिर सी बात है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो है, तो उनकी वजह से यहां पर डिजास्टर का बहुत खतरा रहता है, राइट? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, रोहिंग्याज हैं कौन लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ एथनिक ग्रुप, एक स्पेशल टाइप का रेस है लोगों का, मोस्टली दे आर मुस्लिम्स। और जब पुराने समय में, कॉलोनियल टाइम्स में, उससे पहले भी टाइम्स में, these people migrated from some regions of चिटागोंग, चटगांव जिसे हम कहते हैं, उस एरिया से माइग्रेट करके लोग वहां चले गए। लेकिन जब म्यांमार में फिर से बाकायदगी से सेंसस हुआ, वहां पर काउंटिंग हुई लोगों की, जिसको हम जनसंख्या जनगणना कहते हैं, सिटीजनशिप दिया जाने लगा, तो इन लोगों को फुल सिटीजनशिप नहीं दिया म्यांमार ने। इससे क्या हुआ, ये लोग जो स्पेसिफिक कम्युनिटी के हैं, ये स्टेटलेस हो गए, राइट?
और कहाँ रहते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि these people are spread overall in the entire territory of Myanmar, but they are largely concentrated in one pocket of its land that is called Rakhine province of Myanmar. एक और टर्म है अराकान हिल्स। इस एरिया में जो अराकान हिल्स है और रखाइन प्रोविंस है म्यांमार का, that is the territory in which Rohingyas are largely concentrated, right? सो एक बार आर्मी का क्रैक डाउन जब यहाँ पे हुआ तो काफी सारा वहां पे ब्रूटैलिटी हुआ, द पीपल वेर किल्ड, द वुमेन ऑफ Rohingyas were raped brutally and people have to flee those areas, right? So when they dispersed from that area, they started migrating to all the areas. They also started going to different oceans and they started to go to uh, Vietnam, Malaysia, Thailand, any country where they could save their life, right? So in this process, they also crossed the boundaries and came to Bangladesh. From Bangladesh, they came to India. So you must remember, students, that in past year or past year, 2-3 years ago, these Rohingya issues became a domestic political issue in India. Whenever elections are there in Assam and West Bengal, some parties try to harness political mileage also. That state level politicians are using these people as vote banks because of their religious affinity, being Muslims. There are also certain sections of society which deliberately target these Rohingyas as potential terrorists. So इस तरह का जो भी thread है discourse में, आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए. One very important thing, इस तरह के statements को आप introduction में use कर सकते हैं, कोई breakthrough जैसी line, ठीक है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा Rohingyas are one of the most discriminated people in the world. Now, if this sentence is coming from an authority like the Secretary General of the UN, it carries a lot of moral weight, if not political weight, it carries a lot of moral weight in itself. So, in an essay or in some answer, you can quote this statement directly, and that will be a very good introduction to the question, right? थोड़ा सा हम लोग इसका इंटरनेशनल लॉ में क्या स्पेस है इस तरह की इशू का वो समझ लेते हैं. So there was a convention in 1951 that is called Refugee Convention, and to actualize or to put into effect this convention, a protocol came 1967. इसमें मोटा मोटा आप समझ लें कि if there is a bunch of people which is facing some kind of religious persecution in their country, उनकी जान को खतरा है और वहां से वो भाग कर आपके देश में आए हैं, सो देयर इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट. आप उनको वापस नहीं भेज सकते. ब्लैक एंड व्हाइट में स्टूडेंट समझ लें कि अगर कहीं से कोई ग्रुप ऑफ पीपल, उनको सिस्टमैटिकली परेशान किया जा रहा है, उनको जान का खतरा है, वो शौक से नहीं आ रहे हैं, वो शिक्षा के लिए नहीं आ रहे हैं, वो रोजगार के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनकी लोकल लैंड में उनकी जान को खतरा है, राइट? तो जिस कंट्री में वो आते हैं सबसे पहले उस कंट्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है, द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री टू टेक केयर ऑफ दोस पीपल. इट कैन नॉट टर्न देम बैक. एक लाइन की तो बात ये समझ लें, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बांग्लादेश इज नॉट ए सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन. सो बांग्लादेश से ये कहना कि आप डिफॉल्टमेंट का प्रिंसिपल को फॉलो करें थोड़ा सा डाइसी हो जाता है. इंडिया की जिम्मेदारी है, इंडिया ने भी इसको साइन नहीं कर रखा है, लेकिन इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है. इंडिया कभी भी इस तरह से माइग्रेंट्स को वापस नहीं धकेलता है. बट in the regime of Bharatiya Janata Party in last 2 years, we have seen that there are so many leaders who have said that these people are potential terrorists. These people are having law and order problem for our country. They will create demographic and cultural disturbances in our society. So we should push them back. If we come to power, some political parties said, if we come to power, we will push them back. No Rohingyas will be there in India. So this is political element. You should try to keep it aside when you write an answer, right? But these kind of technicalities, legalities, you should keep in mind. Another convention is there, ICCPR, that is International Convention on Civil and Political Rights, which says Article 2 जो है ICCPR 1966 का, कि जो लोग रिफ्यूजी भी हैं, जो बाहर से आए हैं, उनको इक्वालिटी बिफोर लॉ का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं. Students, before parting our ways, I'll try to give you one more information, that there is a difference between refugees and migrants. Migrants are those people
who migrate to some other country from their native land in search of better life. But refugees are those people who are not going to other places out of choice, but they don't have any choice to live in their own place. They are having systematic persecution at the hand of their own countrymen, राइट। तो इंडिया ने क्या किया, जो लोग रोहिंग्यास के प्रति एम्पैथेटिक नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये रिफ्यूजी नहीं है, ये माइग्रेट करके आए हैं। उन कुछ लोगों का कहना था ये रिफ्यूजी है, ये माइग्रेट करके नहीं आए हैं। सो दिस डिबेट इज नॉट मीनिंगलेस, whether you call some people refugee or you call them migrant makes a world of difference, because then your response will change. Our obligation according to this refugee convention is not towards the migrants. Migrant कोई भी आदमी चाहे कि आज एक बहुत विकसित देश है वहां आके बस जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए उनकी लिमिट है, उनको परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन रिफ्यूजी के केस में क्या है, रिसीविंग कंट्री के पास ऑप्शन नहीं है, आप उनको वापस नहीं भेज सकते। सो इंडिया में ये कोशिश सरकार ने बहुत ज्यादा की कि रोहिंग्यास को रिफ्यूजी न माना जाए, डाइल्यूट किया जाए उनके दावे को कि उनका परसिक्यूशन हो रहा है, जो भी उसके पीछे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट रहे हों, बिकॉज in international relations students, what is at core is the self interest of a country, which is called national interest. And we have maintained good relation even with this military regime in Myanmar, right? Because ultimate interest of Indian government is to propagate and promote and protect the interest of its own people. It cannot protect the interest of Rohingyas at the cost of its own citizens. So student, this is it about this particular topic. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी सिग्निफिकेंट टॉपिक है। इसके फैक्ट्स को भी ध्यान में रखें और इसके कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखें। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन both in prelims as well as mains. So chat box is anytime open. You can post your queries, doubts, any suggestions or anything that you like to ask me. I will always be there to respond to you. Thank you so much.